राइट केମିତି करे ताले मिस्टर हुइज द बस ठीक जण दामी के छे ठीक अछि को कर छै आज रिव्यू रिएक्ट किछि भी कहि पारो बट पॉइंट हला लाइव एक्चुअली करिया थिला बट मो सुनिया पहिले जे लाइव कले सुनिया को पहिले जानी बट सुनिया को पहिले लाइव कले तमे कंटेंट आईडी या फिर कॉपीराइट क्लेम रे फसी पार ट्विच जेतु नुह यूट्यूब रे अपलोड करियार थिला से जुगुरु प्री रिकॉर्डेड करी बनउछि आउ लाइव करियार अभ्यास भी नहीं जेतु टिके अखाड़ लगुछि माने मत लगुछि मैं जदी भाबी कहउछि से प्रोसेस टा टिके स्पॉन्टेनियस बनि जो दैट इज ठीक है आरंभ करवा आज जानी तो कहती फ्यू टिके स्ट्रेस पोस्ट let's see ये audio If Olivia Morris, aka Jenny in Triple R, and Alia Bhatt ask you for a coffee date and you can choose only one, whom would you choose and why? Alia. cool. And I believe you're doing a film with her. If Olivia Morris, aka ये मारियो कॉपीराइट Jenny in Triple R and Alia Bhatt ask आरआरआर के जन देखिछो आरआरआर भाई 3 दिन रे 550 कोटी भाई धुआं करछि भाई अलग लेवल रो धुआं करछि बुझियो उनी को करछि से देखिछो के जन 550 कोटी यार माने मूवी रे माने फैन बॉय हिसाब रे टोटल कहउछि भाई बाहुबली द कंक्लूजन जे बनितला ना लोक जानती थिएटर रे लाइन करी ठियाती सकाळ अबिया लोक अबिया न्यूज रे आसुची जे सकाळ 5टा लोक मान जेगी लाइन करी ठियाउछन सेउडा सत्य कथा मु चेक कली हमर महाराजा थिएटर रे सकाळ 5:15 गोटे शो अछि सकाळ 5:15 आ दादर सीट नै मु 2 दिन पूर्व देखिया माने लेट अस सपोज फ्राइडे रिलीज दिला मु संडे रे देखिली सीट नथिला 5:15 सकाळ 5:15 से लेवल रो क्रेज अछि बट मु मोस्ट स्टोरी बुझी बाहुबली बेले हमें टिके क्रेजी करनेथिलो क्रेजी बेसिकली कोन थिला 1200 किलोमीटर भुवनेश्वर हैदराबाद आमे कहलु भाई बाहुबली देखिया अछि इंडिया रो बड़ स्क्रीन कोटा इंडिया रो बड़ स्क्रीन हला प्रसाद स्लैश स्क्रीन ठीक आगुरा आईमैक्स थिला कोन बकर जे किछि करछि ताका आईमैक्स रो हटे देले बट सेटा स्टिल माने सी एक्चुअली एशिया रो सबटु लार्जेस्ट आईमैक्स थिला ता स्क्रीन हाइट हला सेटा इंपोर्टेंट हला सेठी पड़ी थिला बाहुबली तो सेथि पे आमे 1200 किलोमीटर ट्रेन रे फ्लाइट रे बस रे जाइथिलो हमें स्कूटी नहीं गिरी भाई माने से लेवल एक्सपीरियंस ना तो करिया कथा मु कहूनी जे तमे 1200 किलोमीटर स्कूटी नहीं पळा या फिर ये कर दियो माने बट मो हिसाब रे किछि गोटे एमती क्रेजी लेवल एक्सपीरियंस करे ना जदी कहा पे तमे सेति की चाह रखुछ सेति क्रेजी लेवल एक्सपीरियंस जदी तमे न करियो ना ताले मु सेगवे मार देली बट मु गोटे जिंस कहया भूली देली प्रसाद स्लैश स्क्रीन रो हाइट हला 70 फुट माने जदी 10 फुट हिसाब रे हम घर देखिया छातमाला बट घर इन जनरल 12 फुट थाए ता ऊपर पुनी छात थाए तो से जो धर 6 माला टाइप्स 6 माला हाइट स्क्रीन राइट तो आउ भाई तार गोटे रो रे 35 जन बसंती आउ रो कितरा अछि ए रो में भी जेड जे नहीं जेड जे अछि डाउट रे अछि मैं छोटी मारी देखि दबा कादंबरी टना
गीत गाइले भी कट dude what is this here केम देखिया Hyderabad रे I think रो करती रो बड़ा लगा रो movies I think मैं देखी ली बेली देखो नहीं मत आगे yes आसिला मैं देखी ली ना that's why book tickets हिंदी I think तेलुगु पढ़ती हो तेलुगु 2D 3D प्रसाद लास्ट स्क्रीन में कंप्लीट 70mm 4K लेजर नाइट आनो देवी नो एमबी टा भलटा से मो लव अछि ला लव करू चंती तेलुगु 2D तेलुगु 3D तेलुगु 2D प्रसाद लास्ट स्क्रीन एटा ऑफ कोर्स लव रे रहयो को भाबितले तमे प्रसाद लास्ट स्क्रीन किछि भी शूट रे किछि भी तार आई थिंक 2 सप्ताह हेलानी एटा माने गोटे संडे जाय कि सेकंड संडे जाय कि आज ट्यूसडे कूल एक्सेप्ट करिया हमें गोल्ड 295 यार हैदराबाद रो सब मेन जिंस तो कहबी भाई सेठी सिनेमा अलग लेवल सस्ता तमे देखिलो ना एटा हमर कोन तो कहंती अबे स्क्रीन ये बहुत रेजा देखो छी स्क्रीन साइज लिटरली यू टू स्टार्ट 8 एंड जदी से माउस पॉइंटर देखोतियो आई डोंट नो बट kind of 1 ru na 1 no A1 ru starting E ro 1 ru starting E ro 40 je jaye literally epart आउ कोन तो कोंती ना ना जेड टा गाढ़ा करथि N जे अछि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टा अछि यार 47 टा अछि मो 35 टा मो बुझती मन रखथि तो हमर सीट काइंड ऑफ 8 थिला 46 47 45 46 अराउंड थिला आ इते भी ऊपर नथला मे भी ए रो थिला कोटा अछि जी या कॉलम भीतर सब कंफ्यूज हो जाय पर ठीक है कूल तो भाई माने पॉइंट हला से मो पुनी से मानली टू कूल आरआरआर विषय में बुझी गले ऑफ कोर्स जेहेतु एटा मोर फास्ट स्ट्रीम लाइव नुहटा माने से टाइप रो भाव तो मैं भी मोटिके कॉन्शियस है कि कहूची कॉन्शियस है कि भाबुची वीडियो विषय तो टिके फ्लो आई थिंक मैनेजेबल ओके तो सेठी हमर जूनियर एनटीआर कोन कहिसंदी इफ आई वाज लव्ड विथ अल्लू अर्जुन एंड प्रभास इन अ रूम वी टॉक अबाउट मिस्ट्री भाई ए मिस्ट्री रे तो तुम क्लिक करियो ठीक अछि बट एक्चुअली यार थंबनेल टा मजेदार था हम थंबनेल टा केम देखि लेट्स सी कमांड आर करले आसी जो ना यार If Olivia Morris aka Jenny थंबनेल बेसिकली ये थिला आ थंबनेल लिखाइतला कोन जूनियर एनटीआर बेसिकली राजा मौली रो महाभारत विषय कहूची यार तो बैक करे पहुंच जे बैक करे न पहुंचले फोन फॉरवर्ड रे दो ना करिया बैक आगु चलो फॉरवर्ड मारो ओ आस्ते If Olivia Morris aka Jenny किछि समय पे आस्ते तो बेसिकली से या माने थंबनेल लिखाइतला जे जदी राजा मौली रो महाभारत रो कास्ट पई तुमको सजेशन मगा गला बेसिकली एनटीआर को ताले तमे काहा को चाहिबो जे तार कास्ट लिस्ट रखे काफी खराब सेंटेंस फॉर्म गली बट बेसिकली ता माने से तो से जो क्लिक कर in RRR and Alia Bhatt ask you for a coffee date and you can choose only one, whom would you choose and why? Alia. And I believe you're doing a film with her. मिछा कोच पिला मिछा कहला था Again. नाइस बेसिकली से जो दीटा ऑप्शन देथला सेला आरआरआर जो दी जण हीरोइन अछन गोटे जे कि ब्रिटिश बेसिकली जे एनटीआर अगेन अपोजिट जे माने लीड एक्ट्रेस अछि अब आलिया ऑफ कोर्स लीड एक्ट्रेस अगेंस्ट रामचरण आई थिंक आलिया रो यार कोन ही रोल थिला माने कन्वे करेला जे तमे दी जण सांग होइली माने सेटा मिसेला मूवी रे कम रोल थिला cool The director has plans. Is it like NTR 30?
Just wait for a few days, Farid. Just... If you're locked in a room with Allu Arjun and Prabhas, what do you think you guys will talk about? Wow. If SS Rajamouli asks you to suggest casting for following roles in Mahabharata yes ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଥିଲା movie, which celebs would you suggest for Arjuna? Oh God. Oh my God. I really think I shouldn't say anything about this, Faridunji, because Rajmouli is going to kill me. ରାଜାମଲ୍ଲୀ ସତରେ ମହାଭାରତ ଅଛି ନା 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 ଗାଁରେ ଭାଇ ସାହାବ ୟାର ରାଜାମୌଲି ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମୋର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟାଇମ୍ସରେ ଥିଲୁ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଲିଟରାଲି ବସିକି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆମର 3 ଇଡିୟଟ୍ସ ଭଳିଆ ଟାଙ୍କି ଥିଲା ବଟ୍ ଆମର ହଷ୍ଟେଲର ଟାଙ୍କି ଥିଲା 8th ଫ୍ଲୋରର ଉପରେ ଭାଇ ସେ ଟାଙ୍କିରେ ବସିକିରି ସିଭିୟର ଲେଭେଲରେ ଆମେ କାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ଇଭିନ୍ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ କ'ଣ ତ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 4th ଇୟର ଥିଲୁ ହଁ 4th ଇୟର ଆଇ ଥିଙ୍କ ପାଣ୍ଡବ ହେବେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ 3rd ଇୟରକୁ ଆମେ କାହିଁ କୌରବ କରିଥିଲୁ ଅଫକୋର୍ସ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ହିରୋ ହନ୍ତି ଲୋକ ବଟ୍ ମୁଁ ନଥିଲି ସେ କାଷ୍ଟରେ ଆମେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବେଦବ୍ୟାସ ଆଉ ଗଣେଶ ଟାଇପ୍ସ ଆମେ କାଷ୍ଟ ବନାଉଥିଲୁ ବଟ୍ ଆମେ ନଥିଲୁ ସେ କାଷ୍ଟରେ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ସେୟା ବେସିକାଲି କହୁଛି ଆମେ ପରମ୍ୟୁଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବନେଇଛୁ ଯେମିତି ବଲିଉଡ଼ ଯଦି ରହିବେ ଖାଲି କ'ଣ ତ କୁହନ୍ତି ସାଉଥ୍ ମାନେ ଟଲିଉଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ତ କୁହନ୍ତି ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲଉଡ଼ ଆଇ ଥିଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ ସେଇ ଉଡ଼ ଯେତିକି ତମିଲ ତେଲୁଗୁ ଆଉ ମଲାୟାଲମ ମେ ବି ଆମେ ଜଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲୁ ୟେସ୍ କନ୍ନଡ଼ର କାହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ମୁଁ ସେତେ କନ୍ନଡ଼ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ମିଶେଇଥିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଟୋଟାଲ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ତ ଆମେ ସେମିତି ଭାବିଥିଲୁ ମେ ବି ରାଜାମୌଲି ବି ମେ ବି ଆମର କିଏ ଥିଲା ମୁଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି SS Rajamouli on Triple R. Innocence. All right. Looking for innocence, naiveness. You know, have that naiveness in you, have that innocence in you. Which was the first scene in Triple R when you read you felt like whistling and clapping? Wow, the tiger introduction scene. That was the first thing he told me. So I just tiger introduction ମାନେ ସେ କୋଉଟା କହୁଛି ଯୋଉଟା ଭୀମୁଡୁର introduction ଥିଲା ଡୁଡ୍ ସେଟା ସିଭିୟର ଥିଲା ମାନେ ବଟ୍ ମୋର ଲିଟରାଲି ମାନେ କ'ଣ ତ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋମ ଠିଆ ହେଇଯିବ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଟା ଜଷ୍ଟ ସରି ସ୍ପଏଲର୍ସ ଆଲର୍ଟ ଆଗରୁ କରିଦେଉଛି RRR ଯଦି କିଏ ଦେଖିନ ୟାର ତମେ ଦେଖିନେଇଥିବ ୟାର RRR କିଏ ଦେଖିନି ବଟ୍ ସ୍ପଏଲର ନୁହଁ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କିଛି କହୁନି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ବେସିକାଲି ଯେଉଁଥିରେ NTRର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ୱିଥ୍ ଆନିମଲ୍ସ 8 ଅଧିକ କହିଲେ ମେ ବି ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ସିଭିୟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାଇ ସେଟା ଭାଇ ସ୍ଲୋ ମୋ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ यार ताको जଣା ଅଛି यार ମାନେ ଟୋଟାଲ ସେ ଅନେସ୍ जो क्रिएट करे ना भाई माने लिटरली मूवी रे जति तमे प्लॉट हिसाब से देखियो ना प्लॉट इज गुड माने फ्लॉज अछि यार नॉट लाइक बाहुबली जेमति बाहुबली विल डिस्कस इट समडे बाहुबली आउ RRR एमानकर रिजेम्बलेंस विथ हमर एंशिएंट कोन द कोंदी टेक्स्ट्स जहाँ भी रहला माने आमर जो माइथोलॉजी कहबी नहीं ताको कौन कहू से तळु से वर्ड टाको मु कंस्ट्रक्ट करूची इंग्लिश इन माय माइंड हे जाउची त बेसिकली आमर बेसिकली जो कौन तो कहबी ओडिया भी जदी कहबी तो कौन कहते पौराणिक यार सिंपल मु कहूची महाभारत और रामायण आउ भी जति की माने कत पौराणिक गाथा ठीक है पौराणिक गाथा स्कूल पौराणिक गाथा उपरे आधारित जिते सब आमर स्टोरीज रहा से स्टोरी सहित काफी रिजेम्बलांस रखे बेसिक जिन मुझे हाली हल्का कही दूसरी भाई बाहुबली स्टोरीज तुम जब देख बाहुबली तुम देखी बाहुबली भाई मुझे जानी मुझे 4 थर कि 5 थर देख सारी तो बाहुबली रे गोटे सीन अच्छी नॉट गोटे सीन अच्छी तुम जब बाहुबली को देखी चलो कन्स्टांटली ना तो बाहुबली रे तुम बहुत रिजेम्बलांस पाइब कौन तो कहती महाभारत सिमिलर पैटर्न ट्राए करची RRR रे रामायण सहित बट
will not go there. Instantly whistled and clapped. I was like, wow. Okay, if Olivia Morris, aka Jenny in Triple R, and Alia Bhatt ask you for a coffee date and you can choose only one, whom would you choose and why? Of Alia. course. I would like to, because she for me is a very deep actor, ମିଛ କହୁଛି and I really want to see that depth and learn ମିଛ from her a କହୁଛି lot. And I believe you're doing a film with her. Again, the director has plans, so I'm not going to ruin it. So is it like NTR 30? କହ ନା କହ ନା Just wait for a few days, Farid. Just a few days. That's interesting. If you were to invite Ramcharan and S.S. Rajamouli in your house for a dinner tonight, what dish would you cook for them? Oh, Rajmouli loves papucharu, so I'd cook that for him. Dude, I think କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଟା କେମିତି ଠିକ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ମାର୍କ କଲି ଏବେ ମୁଁ ସେଟା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବି let's see we'll go with the flow I think Chala. Charan loves the biryani I cook, so I'm going to cook that for him. All right. And papucharu and biryani are good combinations as well. So Great. If you're locked in a room with Allu Arjun and Prabhas, what do you think you guys will talk about? wow. Prabhas and Allu Arjun. I think that's a little personal, so I prefer not answering that. Nice. A call or a message you received for Triple R that was the most unexpected? I think it was my mother. You know, when we were watching this film, so I was sitting on a row, you know, niche ka first row mein, you know, we were watching it in the pipe. By the way भाई आ हिंदी टा ना काफी ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀ କହିବା କାଫି ମାନେ ଆମେ ଆରାମସେ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରିବା ଆମ ହିନ୍ଦୀ ଗୁଡ଼ା କାଫି ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ବି ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୀ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନର୍ଥ କହନ୍ତି ବେସିକାଲି ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ସାଉଥରେ ରହୁଛି ବେସିକାଲି ତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତିକି ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ନର୍ମାଲ ତମେ ଯେତିକି ବି ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କନଭରସେସନ୍ କରିବ ସେମାନେ କହିବେ ତମ ଘର କେଉଁଠି ଏଇଟା ସପୋଜ୍ ମାନେ ଇଂଲିଶ ୟା ଫିର୍ ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁଥିରେ ବି କନଭରସେସନ୍ ହେଲା ମେଜରଲି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ତ ପଚାରିବେ ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ତ ଲେଟ୍ସ ସି ଓଡ଼ିଶା ଅଫକୋର୍ସ କହିବ ଓ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଁ କହିବି ନା ନର୍ଥ ନୁହଁ ୟାର ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ପାଇଁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ ଅବଭିୟସଲି ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା ଫେନୋମିନମ୍ ଅଛି ବଟ୍ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିନ୍ଦୀ ବହୁତ କମ୍ କହନ୍ତି ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସାଇଡ଼୍ରେ କହନ୍ତି ହାଲକା ଫୁଲକା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବି ହାଲକା ଫୁଲକା କର୍ଣ୍ଣାଟକାରେ ବାଙ୍ଗଲୋର ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ କହନ୍ତି ଅଫକୋର୍ସ ଯେହେତୁ ମିକ୍ସଡ କଲଚର ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି ତ କହନ୍ତି ବଟ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଡୁଡ୍ ଚେନ୍ନାଇ ତମେ ପଳେଇବ ଲିଟରାଲି ହିନ୍ଦୀ ବହୁତ ଏତେ ସ୍କାର୍ସିଟି ହେଇଯିବ ନା ତମ ଦିମାଗ କାମ କରିବନି ସେମ୍ ୱିଥ୍ କେରଳାରେ ବି ତମେ କୋଚିଂ ପଳେଇବ ୟା ଫିର୍ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଟ୍ରିଭାଣ୍ଡ୍ରମ୍ ୟା ଠିକ୍ କଲି ତ ଟ୍ରିଭାଣ୍ଡ୍ରମ୍ ଅଫକୋର୍ସ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ବଟ୍ ଟ୍ରିଭାଣ୍ଡ୍ରମ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ତ ମୁଁ ଟ୍ରିଭାଣ୍ଡ୍ରମ୍ କହିଦେଲି ସିଏ କହେ ଟ୍ରିଭାଣ୍ଡ୍ରମ୍ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ୟା ଫିର୍ ୱାୟନାଡ଼ ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ତମେ ଯେବେ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେଠିକି ପଳେଇବ ଟିକେ ସେଠି ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ସ୍ପିକିଂ ବାଲା ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ କହନ୍ତି କମ୍ ସେଠି ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ୟା ଫିର୍ ତାଙ୍କର ମଲାୟାଳି ଆଇ ଥିଙ୍କ କେରଳାରେ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଗୁଏ ମାରୁଛି ବେ ହଁ ମୋର ମେନ୍ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ୟାର ହିନ୍ଦୀ ବହୁତ ଭଲ ବାଇ ଦ ୱେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆକ୍ଟର ରହିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏମାନଙ୍କର ତମେ ଦେଖିବି ଥିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦେବରଗୁଣ୍ଡା ବଗେରା ସେମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ବହୁତ ହି ମିଜରେବଲ୍ ତ ହିନ୍ଦୀ ଭଲ So I was on the bottom row and my mom was on the topmost row. And the moment she watched the film, she said, I really wanted to get up, come and give you a hug, cry, and then, you know, sit with you. So that was my first. ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର
beautiful message. which I've Legendary. seen. Amazing. In our interview, Alia Bhatt said, Tarak, please give me your fans. How would you respond to Alia? They're already yours. If your film Jai Lava Kusha were to be remade in Hindi, who do you think should star in it? Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor. And why do you think that? I think he's a phenomenal actor. भाई मान ली यार माने ठीक है बुझी आलो तो Again, a very deep actor. He's very deep. So I think Ranbir Kapoor will do a good job with Jai Lava Kusha in Hindi. All right. If S.S. Rajamouli asks you to suggest casting for following roles in question Mahabharata we must. movie, which celebs would you suggest for Arjuna? Oh God. Oh my God. I really think I shouldn't say anything about this, Faridunji, because Rajmouli is going to kill me. Arjuna, I don't know. I think Oh, at least. it's just NTR. Okay, Arjuna and NTR माने निजु कहले अबे जूनियर सीनियर कह दे सीनियर ला ता जे जाओ NTR. Okay, that's a good start. Karna, NTR. Bhim, NTR. I do diplomatic हो जाए थी Draupadi. Oh God. Alia. Okay, Sri Krishna. NTR. आंसर दो भी That's very interesting. What one thing you'd like to steal from following people? Okay, and not मूड necessarily. खराब कर दिला यार मूड खराब कर दिला भाई डिप्लोमेटिक आंसर यार भाग कौन करियो हमें नाइस आकु फॉलो माने आकु कंटिन्यू करियो देखियो या फिर आमे देखि परिबा टू लेट मी एक्चुअली चेंज वन थिंग मु गोटे चेंज हल्का करिकी पहुंचुची नाइस चेंज कर देले कूलम आई होपम चलिबा नाइस चेंज हेला कोथि सॉरी हां आमी किछि गोटे देखि थांते कहा उपरे आमे रिएक्ट मार परिया गैंगस्टर पर्सपेक्टिव नाइस आमे रिएक्ट कहा उपरे मारिया कहा उपरे रिएक्ट आमे नाइस गाइज स्क्विड गेम देखिछो स्क्विड गेम सेटा मो दिमाग रे हम टोटल भूल जाइथि स्क्विड गेम देखिछो एटा के काने लगैछि स्क्विड गेम ऊपरे आमे रिएक्ट मारिबा या फिर स्क्विड गेम रो फिलोसफी ऊपर बिकॉज़ स्क्विड गेम इज भारी रिच भारी मात्रा रे रिच स्क्विड गेम चलो स्क्विड गेम देखियो SQUARE स्क्विड गेम भाई ये गाड़ी पैसा बनैथिला स्क्विड गेम ऊपर गोटे मिस्टर बीस्ट लाजवाब बनैथिला हम एक्चुअली स्क्विड गेम रो मिस्टर बीस्ट वाला वर्जन देखियो तमे सेटा भाबिलो कि आई थिंक थ्योरी देखियो चाहूछि theory would be great they played wrong actually এটা মু দেখিনি the film theorist এটা কোরিয়ান না না film theory what everyone got wrong about Squid Game জনা নাই काहींगी फास्ट क्वेश्चन मोर ये जो हिंदी समरी एक्सप्लेन्ड वाला वीडियो को फास्ट बैन करिया कथा न बट देखो तार अलग ऑडियंस अछंती बट मोर गोटे सिंपल जिंस अछि तमे जदी गोटे फिल्म को देखियार अछि एटा मो थ्योरी मु कहूनी का ऊपर पुश भी करियो चाहूनी एटा मो थ्योरी जे भाई को भौणी माने तमे माने जदी गोटे फिल्म देखियो चाहछो या फिर सीरीज देखियो चाहछो या फिर अबे कितना गेम रे भी एक्सप्लेन वीडियो दे मुको दिमाग काम करे नहीं भाई गेम रो एक्सप्लेन वीडियो दरकार अछि ठीक अछि बट मोर मेन कंसर्न भाई तमे जतले गोटे फिल्म जने बनौ गोटे फिल्म मेकर
तादरे साउंड रे काम करूची तादरे स्टोरी रे काम करूची तादरे सी तार इमोशन पुरौची तादरे गोटे आर्क देखौची एते भितर जिया नै सिंपली गोटे स्टोरी चली सी गोटे सी तो निशा करी बनी थे के जन बट सिंपल जिनस भाई सी किछ गोटे भाभी चिंती बनै तो ताकू टिके इज्जत देकी जदी देखियार अछि देखिनियो जानी दे कोन छात पकई दबनी पकई परिबन तो कहीं से काम कर सिंपल क्वेश्चन मार अच्छा मोर कहीं स्कूल गेम एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन वीडियो टू एटलीस्ट टिके दूरे रो माने मोर निहाती हेट करेनी माने एमती बट माई माने मते ठीक लागेनी यार जो माने सब देखंती एक्सप्लेन वीडियो मो हिसाब रे के जण था एक्सप्लेन वीडियो देखि दे कि माने जणा नहीं यार एक्सप्लेन वीडियो कोल ठीक अछि करथिली मु चलो एटा देखि दो आगो You're thrown into a series of 6 mystery games with 400 other players. A pot of $44 million is on the line. But more importantly, if you lose, you die. Other channels have covered the tactics to winning the specific games. And honestly, the show itself does a pretty darn good job of showing you creative solutions to its various puzzles. But today, we're gonna help you survive when you're going in blind, just like the contestants. This is how to survive. मु गोटे जिनस फिक्स करिया चाहूली से जो से आइकन आस्तला बट द थिंग इज ताको केमती फिक्स करी हो तो हुआ हो कौन करिया किछु उपाय नहीं किछु उपाय थिबा कथा बट चलो ठीक अछि जा चालू The Squid Game. You're thrown into a series of 6 mystery games. We're gonna help you. 6टा mystery game अछि मो पुणी तमर स्पॉइल करनी तो तुम देखी तो सब न देखी जदि कटि जा दया करी भल बहुत लेजेंडरी शो देखिनियो तापर आसो आलोचना करिबा बट आई होप समझ देखि सब स्क्विड गेम यार सब हाईएस्ट नेटफ्लिक्स रो व्यूअरशिप आछि तार 1657 मिन आवर रो केमि बता बुझे 1657 मिलियन आवर मे भी हां मिलियन आवर बोले तार सो व्यूअरशिप अच्छी सेकेंड रे अच्छी ऑल टाइम इंटरनेशनली सेकेंड रे अच्छी सेकेंड गेम मनी हिस्ट नहीं हेजिस्ट हमर नांती अच्छी की अच्छी मनी हिस्ट नहीं जदी क्यों अच्छी यार कई जन तो अच्छी आई थिंक कोरियन नो maybe ये अच्छी बुद्धि आई थिंक एटा maybe एटा ना नेटफ्लिक्स रो ये आई थिंक वेजिटोन बुद्धि वेजिटोन की मनीस्ट आउट है मनीस्ट आई थिंक 3 रे अछि बट कूल You survive when you're going in blind, just like the contestants. This is how to survive the Squid Game. माइल्ड स्पॉइलर वन तमन बेसी स्पॉइलर नहीं ताल देखो किसी असुविधा नहीं टू इंस्पायर है पड़ेगा देखियो Mild spoiler warning for some of the games and strategies. Hello, Internet! Welcome to Film Theory. Death game in the hopes of discovering a long-lost family member? If so, a USB power bank is the product for you. This device fits into your pocket, is smaller than a cell phone, and can keep your camera. एटा मोर लिटरली डाउट थला स्कूल गेम रे भाई मु जतल सेकंड टाइम आउथरे देखिली स्कूल गेम कंप्लीट देखिन सेकंड टाइम रे जतल देखिली आई थिंक 4टा एपिसोड जे देखिछि ता फोन किंतु स्मरेनी स्पॉइलर की नुह एटा अरे हमें स्पॉइलर आलोचना करिबा बेसिकली जो मन देखिनो कटि जियो देखि के आसीओ बट आई थिंक जेहेतु 1457 घंटा सॉरी 1657 घंटा मिलियन घंटा सॉरी 1657 मिलियन घंटा देखि छथि तो मु एक्सपेक्ट करूछि जे तमे समस्त देखि जाओ पूर्वुर कहलो कि जे देखिनो कटि जाओ देखि के आसो एबे मु स्टार्ट करी पूरा स्पॉइलर ठीक अछि तो भाई तादर जो पुलिस ऑफिसरटा चापारे पसी जाइथा से स्क्विड गेम सेट भितर तो बेसिकली सी गोटे आइलैंड अछि आइलैंड भितर सी उठाउछन्ती लोगन को ता भितर गेम कराउछन्ती बहुत रेजा मु दउछि तुमको समरी बट से टाइप मोर सब मेन कंसर्न थिला से जो पुलिस ऑफिसर गला
से पुलिस ऑफिसर पाखे गोटे आईफोन टे फास्ट कथा आईफोन एते समय चार्ज रखेनि सेकेंड कथा ता चार्ज लास्ट रे सरला बोधे जो कॉल करूला बोधे ता चार्ज सरला मोर जी मन पड़ू तो से विषय से कहूँ यार पावर बैंक यार मोर फास्ट क्वेश्चन थिला भाई तोर चार्ज एते समय रहिला केमिति camera powered for days on end so that when you do finally perform a miraculous escape from Death Game Island, you have more than a few minutes of video and a 50-word notepad file to show for your efforts. USB power banks. Seriously, what were you thinking? Anyway, I finally got around to watching Squid Game, along with most of the rest of the US at this point, and I loved the series. It was tense, it was clever, it was also completely misunderstood by everyone watching it. You see, the thing is being called the next Hunger Games, the new Battle Royale, the cinematic version of Fall Guys. But the thing is, these comparisons really missed the mark because fundamentally dude आर मेन जिंस जोटा मु देखिला बेले इंस्पायर हेतिली गेम रहिला एक्टिंग रहिला सेट्स रहिला सबु गोटे साइड प्रोडक्शन डिजाइन इज एवरीथिंग साउंड भाई साउंड यार टंग टंग यार से म्यूजिक जे देइछि ना देह कोन हे जो भाई ताको गोटे साइड रखो बट तादरे जो ह्यूमन इमोशन देखैछि ना भाई जतले गोटे मनीष सिंपली माने से देइछे भाई तते मु माणिया फोपाडछु तो मुह को पैसा फोपाड़ी तू मरिया पे या फिर मारिया पे रेडी होछु से जतले बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट को पळे आसला ना भाई से पॉइंट रे मु कहली भाई ए शो अलग आवनिछि ए शो को तू केमी देख परियो देख आर्टिस्टिकली देख परियो तू तादर फिलोसॉफी काढ परियो किछि देखियार नै गेम देखियार गेम शो हिसाब रे देख परियो से जो लोक से जो कहउछ ना हंगर गेम्स आ कोन कोनती माने से टाइप रो जति की जॉनर रो मूवीज या फिर सीरीज रहला ता सहित कंपैरिजन करसंदी से जो लोग बट तार अंडरलाइन रे भाई मते जो लागिला ना भाई ह्यूमन इमोशन भाई तादर 6th एपिसोड वन ऑफ द फाइनेस्ट यार को बनै छी यार से एपिसोड धुआं भाई लेट्स सी this isn't how the games in the show work. And if you're one of the people making that comparison, it's likely gonna get you killed. Don't worry, most of the characters in the series fell into the same trap and, well, let's just say it didn't end well for them. But have no fear, MatPat is here. By the time you're done with this video, you'll understand the real way to survive the 6 rounds of playground games regardless of what individual challenges you're faced with. So the next time some random guy in a subway offers you 100,000 won to flip his paper square, or when season 2 finally launches, because let's face it, this smash hit is absolutely getting itself a sequel, you'll be से जगह रे मोटे डाउट अछि एक्चुअली मु कोन से राइटर भी भाई से राइटर जे थिला लिटरली एडा से माने स्क्विड गेम रो स्टोरी मु जति जानि छी मु जे देखि सल्ला पर तो धुआ गेला मु कहली भाई के डायरेक्ट करछि राइट के करछि राइटर रो स्टोरी को राइटर रो स्टोरी आथिला भाई से करियो थिला तार कोनोसी शो माने तार से लेखु थिला प्रॉपर इंडस्ट्री रे बट तार कोनोसी शो से हिट होनथिला मु जति की जानि छी ठीक है ये करती कंदर कोंदी comfort Squid Game real game no bhai creator I think creator ही the writer scam sorry यार मोर कोक सरी गला बे ओके cool अबे सही बे वन डोम युक रिसर्च करती बट भूली जाइछि दया करी भाई माने मते जज करियानी एही राइटर एही डायरेक्टर ऑफ कोर्स जे राइट कला से डायरेक्ट कला काई ना भाई ये स्ट्रगल करछि पिला भाई स्ट्रगल करछि ग्रू अप इन soul he immersed himself in comic books short film बनै छी यार कष्ट करि के बेटु मु को रिसर्च करथि आ विषय विश्वास कर मैं रिसर्च करिया ना मु जो कहूँ सेटा मु एक्चुअली ब्लॉग पोस्ट पढ़ देती ता विषय एते रिसर्च करना था सॉरी यार टिके पवन मार देली concept the idea of Squid Game based on हां मन देखो एटा मु जानथली ए जो ओन इकोनॉमी वाला बस सेटा मु कहयो जानथली तुमको पॉइंट कोन थिला ना भाई से भाई अलगा प्रकार ये थिला कोन तो कोंती ना यार आकुर के बंद कर स्टोरी टिके मोर गप टिके यार प्लस 10 मारी मु कह स्टोरी है ठीक है तो प्लस 10 स्टोरी कोन प्लस 10 स्टोरी बेसिकली ये जे प्लस 10 नो स्टोरी बेसिकली सी गरीब थिला हल्का इकोनॉमिकली टिके गरीब टाइप रो थिला
तो ताकू जना पड़ा जे डेट नियंती डेट माने ऋण से माने उठाती बहुत बेसिकली तांको कल्चर से टाइप जेंती यूएस रो क्रेडिट कार्ड रे प्राय प्राय लोक बंचन तक कहती कौन तक कहती पेस पे यार तो कौन कहती यार किस्ता गोटे कहती यार माने काटू पे नॉर्मल ज्ञान देला बेलू सब थाए आज लाइव करूची मन पड़ने किसी बट ठीक है माने बेसिकली से माने मंथ टू मंथ बेसिकली बंचती हैंड टू माउथ न तो किसी गोटे कह जाए टर्मिनोलॉजी भूलूँ बट पॉइंट है से बेसिकली क्रेडिट कार्ड को पूरा मैक्स आउट कर दी था नेक्स्ट मास जो सैलरी आसो ताको क्रेडिट कार्ड रे पूरेबे पुणी क्रेडिट कार्ड काटिबे माने बेसिकली से माने भयंकर लेवल रे मैक्स आउट करते क्रेडिट कार्ड तांकर डेट बहुत अधिक था तो से प्रोब्लेम टा काइंड ऑफ साउथ कोरिया रे भी हल्का हल्का अच्छी तो जो मैंने ऋणधारी बहुत थिले तांको सी भी से टाइप ऋण नहीं एमती अंध ऋण नहीं ना तो सेठू से फास्ट इंस्पायर है से कहला भाई मत जदि लेट सपोज गोटे चांस मिलता मु पैसा माने काइंड ऑफ लॉटरी टाइप बहुत बड़ अमाउंट पे किसी गोटे मिराक्युलस काम करियो तुम पड़ियो या फिर बहुत चिंदी काम करियो पड़ियो बट सेटा ता पछरे तमरो सिवियर लक लागि दियो अबे हमर लक फिल्म डूड लक को चोरी छंदी माने आज मा कंटेंट आईडी न पड़ी जाऊ एते भलो हित गाय तो पॉइंट हला एटा काइंड ऑफ से लक वाला स्टोरी लाइन नो यार मु कहा साथ कंपेयर करछि मूसा एक खाली रोज डायलॉग कोन थिला भाई लेजेंडरी डायलॉग मते लागे छोटो वाले देखथिली अष्टम क्लास रे एक गोली पांच खाली सीने में गया खोपड़ी खाली समथिंग लाइक दैट भाई मजादार थिला भाई सेतरे श्रुति हासन थिला हमर इमरान खान थिला आर भणजा या फिर पुतुरा जहाँ भी तक कहती मु ठीक से कन्फ्यूज टी अच्छी आमिर खान रो तो भाई से मूवी काफी मजादार थिला से टाइम रे भाई मजा आसला एबे देखले मे भी मु रेजा पेजा कहि हसीबी बट से तळे मजा आ जाइतला तो तादरे बेसिकली से थिला तादरे गरीब नथिले तादरे से दुनिया सब लकीएस्ट लोक उठौतला बट ताको भीतर से कंपटीशन होतला जणे बंचियो टाइप्स जणे नो माने तादरे सर्वाइवल गेम थिला आधरे जेंति सर्वाइवल गेम ते मारिया को पड़ियो कंपलसरी मृत्यु अदरवाइज नाही कि सेतरे भी से मृत्यु बाहर परियोनी आधरे किंतु भाई से ह्यूमन इमोशन आनी ना तादरे चॉइसेस देछि जे भाई तोर इच्छा नहीं कटि जा इच्छा अछि रह लोक कटिले पुणी आसिले भाई एथरे ह्यूमन इमोशन रे खेली भाई बेसिकली पूरा मनीष को पूरा रूट धरी जे भाई जदि गोटे मनीष जो ऊपर आम कहते भाई मो पाखे ऑप्शन थिले भाई मु अलग दान करती मु धर्म करती खाली पैसा नहीं भाई तो से जिनसटा से बहुत मु काफी आर्बिटरी कहूँ माने किसी भी बट पॉइंट है सेटा जे सी ताकू ना से जो कॉन्सेप्ट को बहुत ही रूट रू धरी से नॉइज कैंसिलेशन दे गछि माने से जो कॉस्ट को ना बहुत ही बेसिक को जाइकी खोजी ची आउ ता विषय टिके अध्ययन करी ची प्लस निजर इमोशन लगे से राइटर आउ ता धरे लिखी ची भाई मैजिक भाई यार कौन जो से कौन तो कहती जनकर इनसिक्यूरीटी को नहीं आउ जन को जदि एमतिया जगह स्टांड करेदेवी जो जगह तू कहू ना 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 मुझे बाहर जाती मुझे पसंद था सेमतिया जगह क्वेश्चन पचार टोटाल मरम को नहीं क्वेश्चन जाऊ कहते से लेवल क्वेश्चन उठे आउ तार आंसर को निज इंटरप्रिटेशन में दे भाई जबरदस्त बनी बेसिकली आम देखा मु काफी आर्बिट्रेरी पढ़ी तो ता राइटर को भाई कोडो से जो सीजन 2 ऊपर मोर भी माने बेसिकली सीजन 2 रो स्टार्ट कली ते लंबा स्टोरी कहली प्रथम एपिसोड अब भूलबाल अब भाई कोक नहीं तो सीजन 2 ऊपर मोर भी डाउट अछि आउ से राइटर रे बेसिकली डाउट थिला माने डाउट थिला जेबे आई थिंक सीजन 1 बाहर थिला ताको लोग पचले भाई सीजन 2 आसीबो कि नहीं हमर गोटे मस्त जिंस अछि सीजन 1 गेला सीजन 2 दियो सीजन 2 गेला मजादार सीजन 3 दियो सेमती करी भाई मनी हेस्ट लेजेंडरी थिला बहुत भलो एंड करसंदी बट यार हगी छंती भाई मनी हेस्ट लिटरली हगी छंती भाई बहुत भलो हिथिला बहुत भलो सीरीज थिला मु जानि छी मते बहुत बैकलैश मिलियो होइगा
जदि बहुत लोग देखिले वीडियोटा को ताहले बैकलैश मिलियो नहले जी भी देखियो से कहयो ना भाई मनी हिस्ट काफी मजादार सीरीज थिला एनी टाइम मजादार सीरीज मते ही भल लागे भाई तार से लास्ट रे जो कहे ना मून आई एम अ थीफ भाई से लाइन लेजेंडरी है बट ठीक है हमें कंटिन्यू करबा स्क्विड गेम Be prepared to survive the squid. So pay attention. The information today might just save your life and make you rich in the process. For the 10 of you out there who still haven't watched Squid Game, here's the briefest of summaries just सिंपल जिंस भाई केमी देखिन को 10 जण दमे से तार कथा कहूची so you get through today's theory. Gion is a down on his luck gambler who's in dire need of some cash. He's got loan sharks after him, his mother can't afford her surgery, and on top of that, he's gonna lose custody of his daughter because he can't afford to pay a lawyer. Desperate, he agrees to play the highest stakes game imaginable. He's whisked away to a remote island with over 400 other competitors where, in order to win, they have to survive 6 different children's games. Some of them are pass-fail challenges like red light, green light, where failure results in execution. Others are player versus player games like tug of war, where the losing team बहुत बढ़िया से कहले यार माने मु तुमको सेतल हल्का आवेली मु समरी दो नथली भाई दे बट मु जहा भी कहतली क्यूरेटेड होय रे यार सही जो मु क्यूरेटेड होय को बेसी पसंद करे यार रॉ रे मोर टिके भूलभाल वालो छु या बट ओवर द टाइम team falls to their death. As for why you'd possibly want to risk your life, 1v1 जतले होय फास्ट कहला जो थरे की ठीक बोल हो ग्रुप खेलु छथि जे बोल कला से फसिला आ गोटे 1v1 तू में भी भूल न करू तो टीम जदी भूल कला भी तू फस जाई in a game इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल होनी काइंड ऑफ ग्रुप वर्सेस ग्रुप होच बट तारि तरे को इंडिविजुअल जे ठीक करथियो लेट सपोज आउ चारटा इंडिविजुअल भूल कर देले से ग्रुप एलिमिनेट like this, well, each death adds 100 million won to the prize pool. 100 million won! Can you believe that? Now all of you are scrambling to Google for that conversion rate. Don't worry, I did it too. भाई तांकर काफी माने ये अछि 100 मिलियन वन माने 100 मिलियन डॉलर नो 100 मिलियन कोन इंडियन रुपीस भी नो कन्वर्सन देखो तो 100 मिलियन चलो हजार 10,000 देखो तुम 10,000 1 2 INR 620 टका कम देखो जो कोली बोले 620 टका चलो माकू टंकाटे कर दवा हमर टंकाटे हला तांकर 16 वन हमर टंकाटे तांकर 16 जेंति हमर अमेरिकार 1 USD गोटे डॉलर हला हमर 75 74 75 पाखा भाई अछि हमर सेंति टंका तांकर 16 टंका यार डिवैल्यू होई जी नहीं डिवैल्यू हेई थिला तळे दर भाई काहे की इकोनॉमिक्स रे सॉरी I was watching the show, and so did everyone. About $84,000 per death. Considering that there are 456 contestants, you're talking about a potential prize pool of $38 million. But be warned, once you start playing, you're not allowed to stop playing. And those who do dude $35 million दो से कहि छी आधे जितले माने 45 बिलियन but contestants, you're talking about a potential prize pool of 38 million. बेसिकली 456 मिलियन वन मिले ताको कन्वर्ट करले 38 मिलियन डॉलर मिले 38 मिलियन डॉलर यार ये कन्वर्सन ता मु कर नथि भाई मजेदार जिंस होला आई थिंक मिस्टर भी स्टार्ट होती हो दी 45 मिलियन डॉलर दी सीरियसली आप रे भाई मिस्टर भी देखिया पड़ियो भाई ना भाई एटा मजेदार जिंस भाई $1 million. But be warned, once you start playing, you're not allowed to stop playing. And those who do refuse to play have to worry about clause number 2. Consent form clause 2. A player who refuses to play will be eliminated. When they भाई आधे यार से जो कुछ देखो समरी रे बुझी हो कि आधे रूल्स बहुत अछि आधे मेटाफर्स अछि आधे सॉरी को पियरो repercussion they say elimination, they mean a bullet and your head intersecting in an unpleasant way. The only way out once the games have started is Consent form clause 3. If all of the players agree to stop playing. चालाक बॉय मारला भाई हमर बर्लिन हेबे तांकर मनीस्ट साउथ कोरियन ने भी आउथरे रीमेक होची भाई हमर बर्लिन होसंती Games are allowed to end. That's actually a mistranslation, by the way. It's if the majority of players vote to end. Games are allowed to end. All the players agree to stop playing. এই जुगु ना भाई लिटरली এই जिंस जुगु मको आउ थरे फास्ट ऑब्वियसली फर्स्ट वाच रे मो सांग सहित देखथि आई एम बस इंग्लिश रे देखिलु
बट सेकेंड वाच रे भाई मु साउथ कोरिया देखियो ट्राई करी कहीं ना ये जो ऑथेंटिसिटी कटि जाए तमे तेलुगु फिल्म ना भाई आरआरआर टा जेतु मु घर लोक नहीं गई आईमैक्स सेथिपई गोटे मिनिट यार पानी के ढालु छी टीवी वर्षा होला ना अबे पानी टा के ढालु छी बट हाँ मु बोलथली हाँ कोथली मु हाँ आरआरआर जो घर लोक सब नहीं गई से जो हिंदी देखा नहीं गई कारण मम्मी ऑब्वियसली भौणी से माने बुझीबेनी तेलुगु तो मु भाई अदरवाइज बाहुबली आम जो देखा आसलु 1200 किलोमीटर मुझे स्टोरी कहूली प्रसाद लार्ज स्क्रीन तेलुगु विदाउट सबटाइटल टा चॉइस नथिला जेतु ता पूर्व मु ताकू दी थर देख सारथिली बाहुबली को आइनॉक्स हमर डीएमसी भवानी मॉल सेथिपई मते सबटाइटल दरकार पड़ला कि भाई हिंदी रे डायलॉग ही मनथिला टोटल तो से जहा तेलुगु रे कहतले बुझी होतला मु एबे खाली परफॉर्मेंस देखियो जेतली काना भाई ओरिजिनल ऑडियो जे तमे देखियो ना भाई तादर से एसेंस ही अलग अछि से अबिका भाबो मु ए जिंसटा कहूची ए जिंसटा मोर जड़े ट्रांसलेट करियो इंग्लिश को या फिर कोरियन को नकली लागियो ना कारण मु माने मु जहा भी क्या इमोशन तम सहित बांटुची या फिर जहा भी मु कहूची जहा भी तुमको कम्युनिकेट करूची जगह मु टोटल ओडिया रे करूची नॉट इन इंग्लिश रे कहले मोर भावभंगी अलग हो इट वुड बी डिफरेंट इफ आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश बुझी परछ इंग्लिश रे मु अलग लेवल रे पॉज नेबी हिंदी रे अलग टाइप रो पॉज नेबी ओडिया रे पॉज अलग टाइप रो सिमिलर जदि मु साउथ कोरिया रे कहबी अलग पॉज मते साउथ कोरिया जणा नाही भाई दोए 감사합니다. That's actually a mistranslation, by the way. It's if the So basically, majority we're of players vote in the game. That's why subs are always better than dubs. So anyway, with the rules laid out, let's get to the strategy. Like I mentioned before, the players don't know what games they're going to be playing until they get to the Death Island. If they're observant, they can piece together clues based on the ସେଇଟା ଭାଇ ସେଇଆ ମୁଁ खोजा दे सबटेक्स्ट जो अछि ना सबटेक्स्ट माने बेसिकली भाबो जे सबटेक्स्ट केन बुझेबो बहुत रेजा भाषा जदि बुझेबी भाबो केन बुझेबी टेक्स्ट केन बुझेबी ओके सबटेक्स्ट भाबो मु एका हळदिया ड्रेस पिंदिछि आधरे मु जदि तुमको किछि ए वीडियोटा लेट अस सपोज मु लाइट हार्टेड रखिया चाहूछि ताहले लेट अस सपोज मु ब्लू पिंधांती हळदिया पिंछि सेटा मु कहूनी जे लाइट हार्टेड रखिया चाहूनी बट पॉइंट हला मु गोटे हाइपोथेटिकली मु कहूछि लेट अस सपोज गोटे सिनेमा चलछि आउ जेमती कहती कविवर एठी लिखिछंती जे बेडशीट रो रंग ब्लू कलर थिला से दिन मलय पवन बहुतिला प्राचीररू झियटी देखुथिला आ ताकू संपूर्ण दिगंत विस्तारी ऊपर पड़िले बट मो पॉइंट बुझियो चेष्टा करछ तो बेसिकली सबटेक्स्ट माने हला जेतबले गोटे फ्रेम रे तुम किछि जिंस देखुछ बट ता भीतर किछि जिंस को लुच्चा ही रखाई छी से जिंसटा को तुम फील करिया पे सेटा रखाई छी लेट अस सपोज जणे केमती कहबी मन कर मोर क्या कहिया तुमको इच्छा नहीं मोर आज रेजा मोर देह भल नहीं तुमको नॉर्मल कहूँ तो मुझे हाथ तले हाँ भाई केमती कौन है जदि ए यूट्यूब वीडियो पर्सपेक्टिव रे मु बुझेबा या फिर जदि सिनेमा पर्सपेक्टिव रे बुझेबा सेटा मु एते खराब केमती बुझौची यार सबटेक्स्ट मु ठीक से बुझेई परनी मु एति जानि बेसिकली सबटेक्स्ट माने हला किछि जिंस को उहिया रखिबा जो जिंसटा को ऑडियंस निजे फाइंड आउट करियो आ से जिंसटा को से फाइंड आउट कला पर ताको काफी क्लेवर मिलो तो सबटेक्स्ट ला से टेक्स्ट बेसिकली जोटा मु डायरेक्टली तो मुंह को पड़ सबटेक्स्ट बेसिकली जोटा चापाए रहउची सिंपल भाषा wall decorations around them, but still, it's not going to give them much time to prepare or practice. And so that's what we're going to assume today, that we've just signed up and have no idea what's in store for us. In this massive game of death, what should our general strategies be? First, we shouldn't assume that just because people are dying, that this is a death game, because it's not. The rules state Everyone here will participate in 6 different games. Those who win all 6 games will receive a handsome cash prize. शिवरिंग भाई टोटल बोन चिलिंग म्यूजिक भाई यार मते सबुठु लेजेंड लागे if you survive, you win. And sure, well, each death boosts the pot. It's not like a battle royale or Hunger Games scenario where there can only be one left बैटल राटा मोर एजु मन पेला कि देखिनी भाई हंगर गेम देखिछि standing. Here, there can be more than one winner, and that's important. It means एटा मु जानना से जे मोर देन वन विनर हेई परिबो काहे ना मते लागिला से एमिति
orchestrated କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଏମିତି ବେସିକାଲି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ଗେମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଗେମ୍ ଖେଳ ହେବ ସେଟାରେ 2 ଜଣ ହିଁ ରହିବେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଠିକ୍ କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଗେମ୍ଟା ଏମିତି 1v1 ନଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଗେମ୍ଟା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଖେଳିପାରିବେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ୱିନର୍ ବି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରହିପାରିବେ Means that the survival of one person or even a group of people is not directly negative to your personal survival, which then opens up the question, should you be sabotaging your fellow players in order to boost the prize pot and advance yourself? This is a dilemma that actually pops up repeatedly throughout the series. In the second game, some तो पॉइंट है से माने ये जो लेवल रो मेटाफर अछि आ भितर जो सबटेक्स्ट लुचि कि रहिछ ना माने आकु तुमको मु देखैबी तमे किछि भाबिबो आउ जणु देखैबी से आउ किछि भाबिबो मु देखिली मु किछि भाबिली माने आधरे एते लेयर रो इन्फॉर्मेशन दियै छै ना तमे काइंड ऑफ आधरे जते काढिबो हेते मिलिबो काफी एनरिच्ड सीरीज एटा बहुत मजेदार Song-woo figures out the game before anyone else does, punching a shape out of a fragile honeycomb candy. Knowing this, he immediately chooses the easiest shape and then encourages the other players on his team to split up, getting them to take shapes that are much more difficult and much more likely to lead to their elimination. Obviously, there's all kinds of moral and ethical reasons why you shouldn't intentionally try to kill other people. Moral and ethical basically. Moral and ethical. But what Song-woo does here in Game 2 is one of the stupidest moves that we see anyone make across the entire series. The people he chooses to sabotage are people that have agreed to team up with him. The players who, in the event of a fight, are more likely to have his back as opposed to, say, planting a knife between his shoulder blades. Oh wait, that's exactly what we see happen. They come to his rescue the following night when everyone tries killing each other. But teaming up isn't just about keeping people in your personal alliance safe. Keeping more players in the game for longer means more chances for other people to help you survive. Again, take that honeycomb game as the example. In it, players are given a needle to punch out their shape, which is fine for easy shape. म्यूजिक पडुछि जणा नै यार noise cancellation चक्कर problem गंगलो It's like a triangle, but not very effective for the more fragile shapes like the umbrella or star. However, one person basically ये थिला ए गेम रो कांसेप्ट जे तमकु एटा साउथ कोरिया रो गेम छोटो पिला खेलंती चीनी को तरळेगिरी बना जाय काइंड ऑफ मंडो टाइप रो एटा गोटे बिस्कुट नो काइंड ऑफ से टाइप रो गोटे कॉइन शेप रो भाबो गोटे गोल रो बना जाय जोटा मीठा तुम खाई परिबो एडिबल अछि जेटा ताकू तुम छुंची रे भांगीबो आउ से जो देछि आदर स्टार देछि आउ एतरे अबिका छता देछि तो स्टार टाकू तुम भांगीबो अनहार्म माने सिंगल पीस रे भांगी जाय नथियो छताटा एक्जेक्टली से जदी अम्ब्रेला भांगी गेला फसिला तुम मल्लो सेठी बेसिकली मार देबे person in the group, our hero Gyeon, out of भाई desperation, कमर में थला हीरो ये प्रोटैगनिस्ट हीरो कहि परिबन कहना भाई देखो से जुर को यार मु से जुर सब बेले से गोटे लाइन कहूची देखो भाई पांच जण असनी पांच जण अलग स्टोरी पांच जण अलग इमोशन लास्ट को जो लेवल रे प्लॉट ट्विस्ट अछि ना सेटा स्पॉइलर सेटा म कहिबिनी ना सेटा कहिबिनी comes up with a completely out-of-the-box strategy, ignoring the needle entirely and licking the candy so the shape can pop out. This, in turn, saves multiple other contestants who copy the strategy. People who otherwise would out. This, in turn, saves multiple other contestants who copy the strategy. People who otherwise would have been eliminated just like the rest. That's why it's stupid when the players try to kill each other between... हां गोटे छोटा जिंस जस्ट कहि दोची देखिबा पारे जिंस वाला साउथ कोरिया जति सीरीज बने ना इन जनरल सिंगल सीजन हिसाब बनाते जाने से माने भाबन सीजन 2 सीजन 3 सीजन 4 बने कैश छापिबे जेंति यूएस वाला करंती या फिर अदर यूरोपियन करंती बट हमर साउथ कोरिया वाला भाई बेस्ट लागे मते सेटा गोटाई सीजन बनेबे सीजन रे पूरा हार्ट हाउस और पुरेबे लेजेंडरी सीरीज बनिबो भाई अंकल काफी सीरीज भलो भलो अछि ता विषय आउ के आलोचना Games 2 and 3, because these are men whose lives were saved by the person that they're now... विषय में तुम ए पार्ट विषय में सी भी कहनी मझरे गोटे पॉइंट आसे जतले अंकर गोटे गेम मेकर था फ्रंटमैन जाउ कहंदी एठी अछि फ्रंटमैन ठीक अछि तो फ्रंटमैन कोन करे ना फ्रंटमैन कहे जे आगु जणा पड़ जाय जे जण को मार दियन से भूल रे मरि जाय ठीक अछि सेटा ऊपर भी अछि भूल रे मरि कि बट मो स्टोरी सार को जण भूल रे मरि जाय आउ ये हमर हीरो जी एटोका चिल्लाए जे भाई तमे मरी गला यार से मरी गला लोकटा तमे कोन करू छ ताको उठाओ कि गेम बंद कर ए टाइप रो रिएक्ट करता किछि नाही से माने आसंती सब उठांती पळांती तापरे से जो ऊपर गोटे पिगी टाइप रो पिगी बैंक टाइप रो थाए ऊपर उनते आसे फास्ट गो देखाय जे एलिमिनेशन से जो 456 लगाय देला ना इनिशियली जे नंबरटा 456 तो से नंबर रो 456 नो समथिंग जतले 300 200 जति थांती तादर गोटे एलिमिनेट
आउ से नंबर जाए तापर टंग एंड म्यूजिक बजे तापर ऊपर आसे से पिगी बैंकटा से पैसा गळे जे जणे मले ता एगेंस्ट रे तुमको 1 मिलियन ओन मिलियो तो बेसिकली 45 मिलियन ओन सेमती मिलियो तुमको जदी एतिक लोक मरि गेले भाई साहब से टाइम रे जो थिला ना से टाइम रे मनीषर ग्रीड जो देखेला ना भाई से टाइम रे केही विरोध करलेनी इनिशियली समते विरोध करथले ये चिल्लौथला हीरो हीरो भी साइलेंट हे गेला हीरो एक्चुअली मे बी सेटा अलगा इंटरप्रिटेशन भाई से जो पॉइंट थिला ना भाई सेटा गोटे सेटा भी गोटे काफी मेजर पॉइंट मते लागे से भाई मरि गला लोक देखिले भूल होची पैसा फोपड़ा हला भाई समाज को जो लेवल रे ये रेप्लिकेट करी बनै छी ना सीरीज टा अलग है भाई मजा Now आता attempting to eliminate. You know what they say? Two heads. ना ये फ्रंटमैन जे कहि दे भाई आंकू ओपन छाड़ दियो एबे राती रे बेसिकली लोक जानि जे जदी मु मारी देबी ओपोनेंट को एठी भी संख्या कमी गेले तम ओपोनेंट कमी गेला तम गेम रे भाबो जे मु 100 मीटर दौड़ी हो जाई 10 जण खेलु छथि मु जे जानि मु को मारी देले भी मो अगेंस्ट किछ नै काली के जेते जण दौड़िबे ता भितर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला छी मु जानि जे जदी ए 6 जण दौड़ुछथि मोटो अधिक जोर मु 6 जण मार दे ठीक अछि 4 जण भीतर गेम हो 4 जण भीतर मु जीति भाई ए लेवल रो अछि भाई यार Heads are better than one, so 50 heads should be even better, and 400 heads is even better than that. It's why the internet hive mind is so good at solving puzzles. Everyone brings their own experiences and expertise to the table. So let's just say that you were, I don't know, faced with a challenge that involves jumping across panels of glass, with 50% of those panels being tempered and safe to stand on. Well, it would be really helpful if the group had someone who is a glass expert that could tell the difference between tempered and untempered glass. Oh wait, that's exactly what happens, except instead of sharing his knowledge, I think that जणा पइलानी गोटे पॉइंट the glass expert hides this fact until the end, after practically all the other players have died. This is stupid, not just from a statistical angle, but also from a strategic one, considering that लास्ट से भी मरि गेलानी तने most of the games are timed. Everyone else, realizing that they're just blindly guessing on a coin flip that could cost them their life, wastes time. Every second that you're hiding your knowledge is a second that the group isn't making progress. माने मु भाबिथिले एक्चुअली मु इनिशियली भाबिथिले जे जणे विनर हे परियो तो सेटा मोर पे विभ्रांत धारणा थला कोन बे यार जेटा मु केन जानथि बट आ कहया कथा जे मल्टीपल विन हे परियो ना यार मल्टीपल विन हे परियो केमति कहि काना लास्ट गेम रे ऑब्वियसली से दीटा ग्रुप करथांता ऑब्वियसली सेटा ग्रुप गेम ही हो जे दी जण पर्सन से जो दी जण खेलले बट नहले ग्रुप गेम हो तो ग्रुप गेम रे यार ग्रुप गेम रे भी तो जित्ती पारिबो हां लॉजिकल तो कहू छी तू चाहिबो जदी तोर सही टीम अलायंस अछंती समस्त तो साइड रे अछंती बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल से जो कहू छी भाई देखो As a result, our glassmaker, despite having the knowledge that should have kept him alive through this challenge, ultimately dies because he runs out of time. Had he shared it from the get-go, mostly everyone could have survived what was one of the most disastrous and difficult challenges of the batch. Also, can I just digress here for a minute? This हां VFX छाड़ो मिस्टर बीस्ट वाला VFX one bothered me. I just didn't really like this challenge. I get that it was a cool visual and interesting concept, but the challenge just didn't work for me. It didn't seem to be based on a playground game like all the others. The game makers cheat by turning off the lights midway through, which directly counteracts their whole everyone. yes ସେଇଟା ବି 100% जे लाइट केम तमे ऑफ कर देलो जस्ट बिकॉज़ तमे एंटरटेनमेंट से देखे देलो जे एंटरटेनमेंट पे हम लाइट ऑफ कर देलो ओ भाई मु एडा बोली जेतिले एक्चुअली से ग्लास जे चेक करि पारे जा कथा कहला से बुढ़ा ग्लास चेक करि पारे सो दैट ता कहया कथा जे से बुढ़ा आगु जदी कहता माने कलेक्टिवली नहीं था बट मु एबे मन पड़ला जे बुढ़ा चेक कहीं करि पालानी काना ग्लास जेतले लाइट पडुतला से लाइट रो रिफ्रैक्शन देखि करी जानि परतला जे कोन दा कोंदी को ग्लासटा भांगिबो को ग्लासटा भांगिबो टेम्पर्ड और कोटा नॉर्मल ग्लास अछि बट जेतले लाइट बंद करतला से पॉइंट रे हां बट लाइट बंद करते ए जो कहतला काना ताकू लागिला जे इटा अनफेयर एडवांटेज रे ये अछि maybe as a fair theft, but the challenge just didn't work for me. It didn't seem to be based on a playground game like all the others. The game makers cheat by turning off the lights midway through, which directly counteracts their whole everyone has a fair chance motto. The whole putting people into a specific order felt unfair, and then the way they conclude it with a giant explosive finale. The giant explosive obviously यार flaws तो अच्छी सीरीज flaw नथिले केमिति चालियो भाई flaw अछि बट मत लागु छी जो कहला जे से लाइट बंद कला लाइट ए जो बंद कला कहना से रिफ्रैक्शन देखि नउतला तो ता सी जेतु फेयर एडवांटेज रहउतला बट से लोगों को भी सहायता तो करतला दिले में तो अछि बट मे बी से सही जो ऑफ कला बट ता पर जो एक कथाटा सत कथा जे एटा कोनोसी प्लेग्राउंड बेस्ड गेम नथला तांको से जो 6टा गेम थिला बहुत सिंपल गेम तांको सॉरी से फ्रंटमैन हिसाब रे हाउ गेम मेकर हिसाब रे जो कहता स्क्विड गेम गेम मेकर जो माने नॉट सीरीज मेकर गेम मेकर जो थिले
ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଇଆ ଯେ 6ଟା ବହୁତ ବେସିକ୍ ଗେମ୍ ଖେଳା ହବ, ସେ ଗେମ୍ରେ ଯିଏ ଜିତିବ ଯିଏ ହାରିବ, ସିମ୍ପଲ୍। ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ପଇସା ନେଇକି ଯିବ ଘରକୁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ଗେମ୍ ନୁହଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଛୁଆଙ୍କ ଗେମ୍ ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ସତ କଥା ସେ କହିଛି, ସେ ଯୋଗୁଁ ହଁ ଏଇଟା କୁଲ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଛି। ଆଧାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ କେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କଥା କହୁଛି। ବଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା Finale puts everyone's lives at risk. ଯୋଉ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା ନା ଭାଇ, ସେ ଚକ୍କରେ It was just good ପଶିଗଲା ନା ଲାଷ୍ଟ ଜଣେ ମଲା ସେଇ ଚକ୍କରେ। spectacle, but also something that felt kind of cheap. All right, rant over. Of course, there is the elephant in the room. ମୁଁ ତ ସେତେବେଳଠୁ ରାଣ୍ଟ ହିଁ କରୁଛି। Every player who dies adds more money to the prize pot, but that's the wrong way to think about it. Let's assume that, like we see in the show, there are 6 rounds, and that there will be at least 3 games that require 50% of the players to be eliminated. This would be games like tug of war and marbles, Squid Game ରେ ବି where some amount of death is guaranteed. That means that your portion of the prize pot is already going to be sitting at a hefty 800 million won, $668,000 US, even before any additional deaths from the other games. If you're someone like Gian, who has loan sharks to pay off, a family member's surgery to pay for, and an ex-spouse to fight in court, that amount should cover everything while still leaving you with enough to make a down payment on a new house. There's also an economic principle called the law of diminishing utility, which states that if someone is down on their luck, having an extra $80,000 is a huge, massive deal. If you're Gian, that money has a lot of use. But if you're already standing to win over $600,000, another $80K on top is certainly nice, but no longer is the life-changing sum of money that it once was. Once your basic needs are met, as income increases, you gain a correspondingly smaller and smaller increase in ଭାଇ ସେ ଟାଇମ୍ ରେ ଏତିକି ସବୁ ଭାବି ହବନି। your life satisfaction. You get a slightly nicer car, a slightly nicer house. Therefore, it's not something that's worth risking your life over. This is surprisingly a topic that the last episode focuses on, though for spoiler reasons I'm not going to play the clip. Now, don't get me wrong, I'm not saying that any winner of the Squid Games shouldn't have that spoiler alert, ମରେ ଯେତେବେଳେ ନା ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। money, but what I am saying is that there's a tipping point ତାଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗ ମରେ। ସେଇ 5th ନା 6th ଏପିସୋଡ୍ ଯାହା ବି କଥା କହୁଛି, ସେ ଏପିସୋଡ୍ ନାଁ ହେଲା ଗାମ୍ବୁ। where each additional dollar earned is less and less worth risking your own life to achieve. And by just playing the game with survival as your first priority, you wind up with plenty of money to change your situation while also minimizing your risk of losing that life so, you know, you can go on and spend it. Obviously, there's going to be rounds where you're forced to fight for your life and eliminate other players. But if you don't have to kill people, then don't. Never thought that's a sentence I'd have to say, but here we are. But there is one big concern that you have to be aware of. Clause number 3. At any point, the players can vote on whether or not to end the game. If the majority of players want out, that causes the game to end not just for them, but for everyone. In order for you to walk home with your money, you have to complete 6 games. But people will probably vote to escape the games if they're put into a position where they're almost certainly gonna die. So with that in mind, let's go back to the glass bridge. Unless you have outside knowledge of what tempered and untempered glass looks like, the game is generally decided by random coin flips. And by coin tempered and untempered glass looks like, the game is generally decided by random coin flips. And by coin flips, I mean the first few people in line coming down with a mild case of death for the good of the group. In the challenge, there are 18 sets of panels. Worst case scenario, you have 18 deaths. The best case scenario is 0 deaths, with the person in front correctly guessing every time, but fat chance there. As player number 3 correctly estimates when he's 3 panels in, the probability that I'll get everything right is Hey, you got this! 1 in 32,768. Overall, if you're first in line, you have a 1 in 262,144 chance of survival. The average here is 9 deaths, with the probability distribution curve basically looking like a bell curve, which you can see using any binomial visualization tool. You have one of those handy, right? Using that probability chart, we can see that the first 6 people in line are basically screwed, having less than a 5% chance to survive, while the people going 13th and later have a 95% or better chance to survive. But even if you're trapped in the game with no calculator, it doesn't take a whole lot of brain power to determine that you do not want to be one of the first 9 people to play. So you, as a smart player, hopefully chose not to be one of the first few people in line. But even if you're feeling good about your odds of survival, remember that for you to actually make it across the bridge, you need the game to happen. Let's say that the game has been reduced to 13 players, and you're lucky enough to be 13th in line. That's good news for you. You have 95% odds to survive. However, you
probably won't make it across the bridge for the simple reason that there are good odds that the first 7 people in line are gonna nope the heck out of there, going with a majority vote to end the game, meaning that even though you had the ideal position and would have won, you get nothing. Good day, sir! And you see, this is exactly what could have happened in the show. 16 players remaining, knowing that the first 9 were likely to die, they could have voted to end the game right then and there, and because they were in the majority, clause number 3 would have been enacted. Game over. Now let's take the alternate scenario. Let's assume knowledge was shared and everyone... Basically कौन गेम जीती होगी. Nice. Of course. सेटा तो fast video logic थी. cooperating. At this point, there would have been 2 50% elimination games, tug of war and marbles. In the best case scenario, 456 players would have been reduced to 114. By the time you get to the bridge, even if every single one of those first 18 people in line got cold feet, they wouldn't have enough votes to end the game. And instead of most of them being wiped out, we'd expect an average of 9 of those players, or 8% of the 114 player group, to get eliminated. 92% of players surviving to get past this game, pretty darn good odds. In short, your chances of survival increase the more people are around you to take the blows. So now, obviously hypothetical but same condition series से लेवल रो स्ट्रेस कंडीशन रे तमे से लेवल रो डिसीजन नबो सही बेसिकली चॉइसेस यू मेक विल डिसाइड हु यू विल बी और व्हिच वे यू विल गोइंग टू बी माने बेसिकली सही है तुम चॉइस भाई एई टाइम रे मिलियंस ऑफ चॉइस अछि ता भीतर मु गोटे चॉइस नउछि मो पाके प्रति जिंस करियर मो काच फोपाड़ द्वारा चॉइस अछि मोबाइल फोपाड़ द्वारा चॉइस अछि चेयर रे मु सीधा बसिया माने बुझौछ भाई सिंपल ता भीतर मु गोटे चॉइस नउछि. Now that we've spent a lot of time talking about what not to do, what can you do to increase your odds of surviving in Squid Game? Apart, of course, from playing nice with your fellow competitors. Well, the first one is... से टाइम रे जो लेवल रे पैनिक थियो जो टाइम रे एंजाइटी थियो तम भाई जीवन तम आगे लोक मरु संती भाई केमी तम नहीं परियो डिसीजन बट सी जोटा कुछ मैथमेटिकली प्रॉपर मैथमेटिकली इक्वेशन लगे कि जदी हम सब दिमाग लगे भाई एमती चलियो सब गेम रो रूल हिसाब रे 3 नंबर रूल हिला जेतल जो पॉइंट रे पहुंच जे तेतल हम एतिकी लेवल लोक बंची चलनु सही पॉइंट रे हम गेम पॉज कर दो बंद कर दो बेसिकली थर्ड रूल रो मीनिंग से जे मेजॉरिटी लोक जेतल मना कर देबे गेम बंद हो जाय. Obvious. Don't panic. Red light, green light is an easy game, and the timer was very generous as long as you stay calm and you use your time wisely. Also, just like with the 3 clauses, make sure that you're paying attention to the game's rules. For instance, we see Songwoo cheat at marbles by misdirecting his partner, but his method for collecting 20 marbles doesn't actually involve breaking any of the rules that are established by the game master. The player who manages to take all 10 marbles from their partner wins. चोरी थिला भाई सही पॉइंट ना भाई एही एपिसोड एला गांबू एपिसोड धुआं एपिसोड भाई धुआं. Repeatedly throughout the series, we see players presented with an obvious solution, like the needle in the honeycomb game, and they just assume that because this is the default or recommended way to play the game, it must therefore be the only way to play the game. But rarely is that the case. You can lie to your partner and take his marbles. You can lick your candy until the sugar melts. The problem everyone falls into is that they assume certain rules are there when in fact they're not. In the Glass Bridge episode, we see that Gyeon was able to take a single marble as a keepsake with him, which ended up being relevant in that very game. A second, third, or 20 more marbles could have come in real handy with that one. Also with that glass bridge, the rules just state that you have to jump from panel to panel. For this game, you will guess which one of the next 2 tiles is the tile made of the stronger tempered glass, and only step on those across the 18 pairs of tiles. But nothing said that you had to land on the middle of each panel. Landing with your feet on the supporting bars holding up the... एटा मु भाबिथिली विश्वास करियोनी मु भाबिथिली भाई साइड रे जो सपोर्टिंग बार अछि ता धरती चल चली पड़ेबी हे परियो glass is going to reduce the weight on that glass, ultimately helping resist the breakage. Is it breaking the rules? I don't know. Honestly, I don't think so. But here's the thing. You know that you're going to die if you choose wrong, so why not try pushing the edges of the rules just a little? से लेवल रो पैनिक से लेवल अंडर प्रेशर रे से लेवल रो डिसीजन जे तमे मेक कर देलो bit when there's nothing else to lose. By taking a moment to think about the actual hard rules of the game and not automatically dismissing unconventional solutions by assuming that anything else isn't allowed, you might actually be able to find the loophole that allows you to survive. Lastly, use your surroundings. पानी को उठोछ मजरी
games. Not only are the walls giving you clues, but your clothes, the bed, the springs, and the mattresses, all of it could potentially prove useful. Were you given a glass bottle yesterday as a part of your meal? Instead of breaking it to try and shank your opponents, why not bring it with you to your next game? Tug of war. Throw it onto your opponent's platform to throw them off balance, or put glass under their feet. Maybe cut the rope so neither side loses. Another thing that I want to get off my chest. neither side This is just a terrible idea. I think that doll senses when you move around. That person in front of you is gonna stop at times that you don't expect or anticipate. If they get shot, that bullet might go through them and pierce you, or their dead body might knock into you. And instead of focusing on the game itself, you're gonna be focused on another person as you run down that field, which is not where your attention needs to be. In short, your #1 strategy to surviving the Squid Game should be to ignore Sung-woo. I think it would put us at a disadvantage if we just choose one. You think? For being the smartest person in the room, all of his ideas are dumb. I guess except for the tug of war game. Anyway, if you happen to meet a well-dressed man in a train station who invites you to throw squares of paper at each other, now you know what to do, and that's to say no. Because unless your desire to win more than $500,000 is greater than your desire to have more than a 12% chance of surviving the next week of your life, it's not going to be worth it. $668K. But hey, that's just a theory. Theory. I'm काफी टाइम कर लेना. Hello. मते काय लागुची मते गोटे जिंस लागुची मु पेड़ा करी सारची ऑलरेडी. आ मु सेटा जानि छि मु कोन पेड़ा करी छि. भाई खराब लागुची. एटा मे भी फास्ट स्ट्रीम थिला मु जानि एटा अपलोड करिवि कि कोन करिवि बट गोटे मु पेड़ा काम कर देछि सेटा फास्ट मु फिगर आउट करे ठीक ठाक हे कि नै जदी ठीक हेतियो ताले एटा अपलोड हो जदी भूल हेतियो ट्रैश बट पुणी देखा बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज आछी गोटे स्ट्रीम कला परे मते जणा पला जे के बढ़िया सॉरी नेक्स्ट टाइम कोका कोला भी रिजर्व रखिबी अल्प बेती भी ठीक लगे सुगर इनटेक बहे हवा दरकार आगो एटा काढी दे ठीक अछि तो कंदा कोंथि लेट्स सी स्ट्रीम टा जाउछि ना सेते पर्यंत किछु रे आउटरो कोन दो आउटरो जणा नै यूट्यूब काटी दो कट कर देना इधर से